Hello guys, this is the ninth lecture of chemical kinetics, and in today's lecture we are going to actually solve the numericals of the first order kinetics. So first I want to brush up your topic, that is first order kinetics. In the previous lecture we have talked about the first order kinetics. In first order kinetics we have talked about uh, what is the how the rate is changing with respect to concentration, and if you see the rate of reaction equation, it is proportional to the reactant concentration. So if concentration of reactant decreases, then rate is also decreases. Whereas in the zero order reaction, rate is constant because it is equal to rate constant, which is a constant value if temperature and pressure are constant. Okay. So if reactant rate increases, then rate increases. If reactant rate decreases, then rate decreases. So the rate versus concentration graph is a straight line passing from origin, and slope of that line will give you a rate constant, that is K. Then we have solved the integrated rate law for first order kinetics, since we know R is equal to Ka, and from the first lecture of chemical kinetics, we know that R can be written as minus dA by dt because A is your reactant. That's why minus. So compare both the equation, and by comparing we get the equation that is log A is equal to log A naught minus KT upon 2.303 base 10, log base 10 actually. And then we have make a graph of concentration of logarithm of concentration of reactant with respect to time, which is also a decreasing straight line decreasing curve with negative slope, and passes from the intercept log A naught, that is initial concentration of reactant. So slope of that line will give you minus K upon 2.303. Whereas in zero order reaction, we have a curve like this, where concentration A with respect to time and slope of this line, that is tan theta, will give you minus K. So, and this is A naught. So for zero order reaction, the graph will be in terms of concentration of reactant with respect to time, whereas in first order reaction, it is a logarithm of concentration with respect to time. Then next, we have go through the other forms of uh, integrated rate law for first order reaction, and in that we have used two forms in which one of them is useful to solve the numerical, and we will use this form to solve numerical today. Okay, only this form. T is equal to 2.303 K divided by K log A naught by A. And the second for is the for concentration, how concentration decay with respect to time, which is an exponential decay. And the graph will be like this, exponentially decreasing with respect to time. Then half-life of reaction, since for zero order reaction, the half-life come out to be A naught by 2K, but for which depend on the initial concentration, but for first order reaction, half-life come out to be 0.693 by K, which is a constant value. So for zero order reaction, TF is directly proportional to initial concentration, where first order reaction TF is constant. Then we will go through the lifetime of reaction. So for lifetime of reaction, as you know, for zero order reaction, the TLF is equal to A naught by K, which is the double of the half-life time. So for zero order reaction, we can say, so for zero order reaction, we can say that reaction goes to 100% taking time of 2 half-life, 2 T half for zero order reaction. But for first order reaction, it will take infinite time to go to
fully convert the reactant into the product. So it means first order reaction cannot go 100% completion. Then we will talk about the some graph of the first order kinetics, some important graph of first order kinetics, rate versus concentration graph. I have already told you. Similarly, rate versus time. Since rate is R is equal to Ka and A is equal to A naught e to the power minus Kt. If we put A is this value, then we get R is equal to K A naught e to the power minus Kt. So since Ka naught is constant, so right is also exponentially decays with respect to time. So this is your exponential decay where it starts from Ka naught. Okay. Then we have talked about the log of concentration with respect to time for first order reaction. And if graph given in terms of log base e, then the slope is minus k. If graph is log base 10, then slope is minus k by 2.303. So from the slope, we can find the rate constant, or from the graph, we can tell the order of the reaction. Then we have talked about the concentration with respect to time, and then T half with respect to initial concentration. Since for zero order reaction, it will be increasing. And for a first order reaction, it will be a constant value because the value of T half is 0.693 by K. And concentration of product with respect to time. So for that, we have solved and we get x is equal to, which is the product concentration at time t, which is equal to x is equal to a naught e 1 minus e to the power minus kt. So then to make a graph, we get at t is equal to 0, x is 0, and t is equal to x is a naught. So it will tend to a naught when t is infinity. So graph should be like this. So initially the slope is high, then slope is decreasing, typograph for product concentration. Okay. So next now continued lecture 9 continued 8 lecture continued, and this is lecture 9. So in today's lecture we are going to solve some numericals for first order kinetics. So question 1 in a first order reaction, the concentration of reaction decreases from 800 mole per decimeter cube to 50 mole per decimeter cube in 2 into 10 की power 4 second. Find the rate constant. So ऑप्शन दिए हुए हैं. ए पार्ट है 2.1 into 10 की power minus 4 second inverse. B 2.1 into 10 की power 4 second inverse. C 1.37 into 10 की power minus 4 second inverse, and D 1.37 into 10 की power 4 second inverse. So solution. So you know what formula we have to use here. So pause this video and solve it, and then check you are correct or not. Okay, first try to solve with your own. Okay, now I'm going to solve. So we have to apply the equation of this divided by k log a naught by a. Now what are the data we have
data is given. In a first order reaction, the concentration of reaction decreases from 800 mole decimeter cube to 50 mole decimeter cube in 24 seconds. So we have know the time. This is 2 into 10 to the power 4. So 2.303 by K log A naught is your 800 because it decreases from 800 to 50 and both have same unit. So it will cancel out. So 50 हो गया 16. So 2 into 10 to the power 4, 2.303 divided by K into log 16. Log 16 can be written as divided by K to the power 4, 2 to the power 4. So that can be written as 2.303 divided by K into 4 log Q. And we know this and this is ln2 and the value of this is 0.693. So 2 into 10 to the power 4, 0.693 into 4 divided by K, 2 to 2 cancel out. So K is equal to 0.693 into 2 to 10 to the power minus 4 second inverse. Then this is 6, 8, 3, 1.386 into 10 to the power minus 4 second inverse. This is the rate constant and this value is near to 1.37. So option C is correct. So which option is correct? C. Okay. Everybody got the answer? Okay. So this is the way you have to solve this equation. Just use the equation I have told you to use to solve the equation, solve the numericals, and then use the data which are given in the question, and then do some mathematics and you will get the answer. Okay, now question number 2. Question 2. A first order reaction, a first order reaction is 20% completes in 5 minutes. In 5 minutes, find the time in which it is 60% completes. So A part है इसका, ऑप्शन है 10 मिनट, बी है 20 मिनट, सी है 30 मिनट and D है 40 minutes. So now I will going to solve it. So we have to use same equation, T is equal to 2.303 divided by K log A naught by A. Now question, what is the question? Question is, a first order reaction is 20% complete in 5 minutes. Find the time in which it is 60% complete. So 20% complete means if at T is equal to 0, it is A naught, A is A naught. Then at T is equal to 5, it is completed like 1 minus 0.2. 20% complete, but 20% of A naught is converted into product. So how much will left? Point A naught. So at T is equal to 5 minutes, we have point A naught left and initial concentration is A naught. So 5 is equal to 2.303 divided by K log A naught is your A naught and A is 0.8 A naught. So A naught cancel out. We have 2.303 divided by K log 10 by 8. We can write 5 by 4. This is equation number 1.
Then it is asked find the time in which it is 60% complete. So T 60% we know. So T is equal to T 60%. It means A converted 60%. So how many left? 0.4 A naught is left. So 2.303 divided by K log A naught divided by 0.4 A naught. So A naught to A naught cancel 1 upon 0.4, that is 10 by 4. So 2.303 by K log 5 by 2 T 60%. This equation number 2. So now equation 2 divided by equation 1. So we get T 60% divided by 5. This is constant, so they will cancel out. So log 5 by 2 divided by log 5 by 4. So T 60% divided by 5 is equal to log A by B is equal to log A minus log B. Similarly, log A minus log B, which is 2 log 2. 4 is 2 square, 2 log 2. Okay. So now log 5, value of log 5, I have already tell in previous lecture. What is this 0.6990, or I can write 0.7 also. So I have write it here. T 60% divided by 5 is equal to 0.7 minus 0.3 divided by 0.7 minus 0.6 is equal to 0.4 divided by 0.1, that is 4. So T 60% is equal to 20 minutes. So answer is 20 minutes. Okay. Then we will solve another example, another type of question. So question number 3. If a reaction is A to product, and all the above question is simply A gives product type of reaction. First order reaction, ये given है कि it is a first order reaction. First order reaction, the concentration of A changes from 0.1 molar to 0.025 molar in 40 minutes. In 40 minutes, find the rate of reaction when concentration of A, find the rate of reaction when concentration of A is 0.01 मोलर. ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं? ऑप्शन है ए पार्ट 2.79 10 की पावर 4 मोल पर लीटर, मोलैरिटी मिनट इनवर्स. बी पार्ट 3.47 into 10 की पावर 4 molarity minute inverse. C part 2.79 into 10 की power minus 4 molarity into minute inverse. And D part 3.47 to 10 की power minus 4 molarity into minute inverse. Okay. Now, because now I am going to solve it without wasting any time. So the
So we have to use again the same equation. T is equal to 2.303 divided by K log A naught by A. So oh, what are the data is given? The concentration of a change of a 0.1 molar to 0.02 molar in 40 minutes. So we have given in 40 minutes concentration of A, which is A naught, is 0.1 molar and A is 0.025 molar. So we could log 4. It is log 4. So 40 is equal to 2.303 divided by K log 4. Log 4 is 2 log 2. So 42.303 divided by K, then it came to be 2 log 2, 2 to 20, 2 to 20, and this both is L into 0.693. So K is equal to 0.693 divided by 20. So 0.693 divided by 20, which is rate constant. So we can write his K 6.93 divided by 2 to 10 to the power minus 2. We can write it this 10 to the power minus 1, 10 to the power minus 1, 10 to the power minus 2. And the unit should be minute inverse, because for first order reaction rate constant unit is minute inverse. So we know the rate constant, and it is written as first order reaction. Reaction is A to product. So rate can be written as R is equal to Ka, and we have to find the rate of reaction when concentration of A is 0.0 m. Then rate is equal to K 6.93 divided by 2 10 to the power minus 2 into 10 to the power minus 2. So A is equal to 3.465 to 10 to the power minus 4 molarity minute inverse. So answer is T bar. Answer is T bar. Okay. Now question number 4. Question number 4. The fourth question is, if for a first order reaction, for a first order reaction, K is equal to 6.93 10 to the power minus 3 minute inverse. Find A T half, B T13, C T23, and D T3/4. So A T half. T half is 0.693 by K. So 0.693 by 6.93 into 10 to the power minus 3, which is equal to 10 to the power minus 2, 10 to the power 2, 100 minute. And then B part is your T to the power 1 by 3. So for T to the power 1 by 3, we have to apply the equation 2.303 by K log A naught by A at T half means 50% complete, at T 1 by 3 means 1 by 3, I think 33% complete, so 67% incomplete. So A should be 2 by 3 A naught. Okay, A should be, so at
T half A should be 2 by 3 A naught. That is left. So T1 by 3 is 2.303 by K log A naught divided by 2 by 3 A naught. So it's 3 by 2 log 3 minus log 2. So T1 by 3 is equal to 2.303 by K log 3 minus log 2. Okay. Or we can say like this, log A naught upon 1 minus 1 by 3 A naught. 1 by 3 A naught. So A naught to A naught cancel out. And for T half, we can write like this also. T half is equal to 2.303 divided by K log 1 upon 1 minus 1 by 2. Okay. And C part, I will write it here. T2 by 3, it means T1 by 3, 1 by 3 left, 2 by 3 consume. So T2 by 3, we can write 2.303 divided by K. It is T divided by K log 1 upon 1 minus 2 by 3. And D part, we can write T3 by 4 is equal to 2.303 by K log 1 upon 1 minus 3 by 4. So if you can see the pattern here, if it is log half T half, then it is 1 upon 1 minus 1 by 2. If it is asked 1 by 3, it is about 1 upon 1 minus 1 by 3. If it is asked 2 by 3, it is about 1 upon 1 minus 2 by 3. If it's at 3 by 4, it is log 1 upon 1 minus 3 by 4. So general expression, if we make general expression for fraction conversion, a fraction conversion, a fraction time, fraction time, we have, if f is the fraction, then tf fraction time, fraction conversion नहीं होना चाहिए, 50% conversion. So tf is equal to 2.303 divided by k log 1 upon 1 minus f. Don't use this equation again and again. Just remember, for fraction conversion, tf, which is a fraction f, so 2.303 by k log 1 upon 1 minus f, directly use this instead of use this. So we can correctly get this. So, and I have used analogy from here to get this, but you can prove it also. If you want to prove it, actually if you know about the mole fraction conversion, I don't know, you know or not know. If X is conversion of reaction, any type of reaction, not first order, second order, but any type of reaction, then X can be written as Ca naught minus Ca divided by Ca naught. Okay, so Ca naught is your initial concentration, Ca is your final concentration, and Ca naught is initial concentration. So if you find Ca naught in terms of X, then we can write X is equal to 1 minus Ca by Ca naught. Then this come out to be Ca is equal to Ca naught 1 minus X.
1 goes to x goes here, ca by c naught goes here, तो 1 minus x, then ca goes c is equal to c naught 1 minus x. And if we put in terms of a, if we put c naught minus 1 minus x, then c naught can, then t can be written as t is equal to 2.303 divided by k log ca naught by ca, and put ca here, ca naught minus 1 minus x, then we have t is equal to, I will use a different color here. Then we have t is equal to 2.303 divided by k log 1 upon 1 minus x. Okay, this is how you can prove this equation. This comes from analogy, but you can prove it. And the proof portion is this. Here you can, this is how you can prove it. Okay. So if the conversion is given, only the conversion is given, not initial concentration, final concentration. So use this equation instead of this equation. Okay. T is equal to 2.303 by k log 1 upon 1 minus x. Okay. So only I think these 4 type of, I have teach all the types of equation, type of question in the first order reaction. So we will talk about the some example of first order reaction. Examples of first order reaction. First is, as I've told in the previous lecture, that is nuclear physics, that is radioactive decay. Radioactive decay are follow the first order kinetic. Nuclear physics, that is radioactive decay. सिंपल है. इसमें रेडियोएक्टिव डिके में क्या होता है, इसी क्वेश्चन जब भी रेडियोएक्टिव डिके के आते हैं फिजिक्स में, एक्चुअली वो आते हैं कि आप इस रेडियोएक्टिव मटेरियल की हाफ लाइफ बता दीजिए. तो हाफ लाइफ सिंपल 0.693 बाई के फर्स्ट ऑर्डर टाइम टू. और आपको अगर पता होगा कि फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करेगा तो सिंपल है ना. तो सेकेंड इज योर ग्रोथ एंड डिके ऑफ बैक्टीरिया. वैसे तो देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे इसमें जो, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ एग्जाम्पल वो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है. उनमें क्या होता है कि पेपर में डायरेक्टली आपको क्वेश्चन आ गया कि एनी बैक्टीरिया इज डिके, अ बैक्टीरिया इज डिकेइंग विद दिस रेट एंड कुछ ऐसे लिख देंगे, और उसमें आपको ये नहीं बताएंगे कि फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है. रेट दे दिया उसका, और ये नहीं बताया कि फर्स्ट ऑर्डर का है कि नहीं है, और उसके बाद में आपको क्वेश्चन वोश्चन पूछ लिया. तो आपको अगर एग्जाम्पल पता है कि भाई अगर बैक्टीरिया के डिके और ग्रोथ की बात करते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, या फिर हम न्यूक्लियर फिजिक्स में रेडियोएक्टिव डिके की बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को बात करेगा. डायरेक्टली आपको फर्स्ट ऑर्डर ना देके पर आपसे पूछता है फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चन. तो ये सब एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए. तो मैं वो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल पे ही बताऊंगा ज़्यादा. भाई एग्जाम्पल तो ऐसे बहुत सारे हैं, मैं सबकी बात नहीं करूंगा. सेम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल जो पेपर में पूछे जाते हैं या पूछे जा चुके हैं. इन्वर्जन ऑफ केन शुगर in acidic medium. तो उसमें क्या होता है कि जो आपका सुक्रोज होता है C12H22O11, उसका अगर हाइड्रोलिसिस किया जाए इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडिया दैट इज H+, सो वो आपको ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दोनों में टूट जाता है. ये होता है ग्लूकोज. सेम इक्वेशन है दोनों की, बस इसमें क्या होता है कि जो रोटेशन है अगर आपने पढ़ा होगा वो अलग हो जाता है. इन्वर्जन का मतलब ये होता है कि जैसे ये आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है और ये आपका भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है ग्लूकोज जो होता है, बट जो फ्रक्टोज होता है वो लीवो रोटेटरी होता है. तो इन्वर्जन हो गया ना, डेस्ट्रो से लीवो. आप कहेंगे डेस्ट्रो से डेस्ट्रो बन रहा है, बट अगर आप
इसमें परसेंटेज की बात देखें तो फ्रक्टोज ज़्यादा होता है ग्लूकोज की मात्रा में। तो फ्रक्टोज अगर ज़्यादा है तो जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट का पोल जो रोटेशन होगा लीवो रोटेटरी होगा। सो डेस्ट्रो से लीवो हो गया, इसीलिए इन्वर्जन ऑफ केन शुगर हुआ। और ये जो डेस्ट्रो से लीवो होता है ये आपका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। ठीक है। देन वी हैव एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। तो ईस्टर में क्या है, ऐसे CH3COO C2H5 है, उसकी हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर के प्रेजेंस में इन टर्म्स ऑफ H+। तो ये आपका एसिटिक एसिड और एथेनॉल पे टूट जाएगा। भाई इस यहाँ से वाटर निकाल दीजिए तो ईस्टर बन गया, वही वाटर हाइड्रोलिसिस वाटर ऐड कर दीजिए तो फिर एसिटिक एसिड और अल्कोहल बन जाएगा। तो वही चीज़ है, सॉल्ट है ये एसिडिक एसिड बेस सॉल्ट बनाएगा, सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस करेंगे फिर एसिड बेस में टूट जाएगा। ठीक है, नथिंग टू फैंसी अबाउट इट। एंड देन वी हैव डिसोसिएशन। हाँ, ये जो दो डिसोसिएशन के हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के हैं, क्योंकि इन पे बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं। डायरेक्ट डायरेक्ट क्या दे देता है कि आपका N2O5 का डिसोसिएशन हो रहा है और उसकी इक्वेशन भी नहीं देगा, और ये भी नहीं बताएगा कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और उस पर आपको क्वेश्चन पूछना चालू कर देगा। डिसोसिएशन लिख देगा कि N2O5 डिसोसिएट into NO2 and O2, and the rate is given as like this. Initial concentration on to is this, find the rate constant, and ऐसे ऐसे करके पूछ लेगा आपको। तो आपको पता होना चाहिए कि N2O5 जो है वो कैसे टूट रहा है, या फिर किस ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, वो पता होगा तो ठीक है, नहीं पता होगा तो दिक्कत हो जाती है उसमें। 4NO2 प्लस O2। सो N2O5 का जो डिसोसिएशन है वो टू मॉलिक्यूल ऑफ N2O5 आपको 4 मॉलिक्यूल ऑफ N2 और 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2 में टूटते हैं। तो ये पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अ, ये बैलेंस इक्वेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हमने आपको वो करवाया था T = 2.303/K log A0/A, वो एक्चुअली क्या है ना, वो एक्चुअली उसमें स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का कोई रोल नहीं था। ठीक है, अगर वो जनरलाइज होता तो स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रोल आता, तो स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रोल आने से जो के की वैल्यू थी वो चेंज हो जाती, सिर्फ कांस्टेंट ही चेंज होता, इक्वेशन वही बनती। भाई के आपका जो 1K था वो 2K हो जाता, या भाई स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का n है तो NK हो जाएगा, वो बस बस उतना ही चेंज होगा और नथिंग चेंज इन द इक्वेशन। तो वो कांस्टेंट ही चेंज हो रहा है, वो कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है। देन वी हैव 6 टाइप। So then we have one more, which is dissociation of H2O2. Dissociation of H2O2। तो इसमें भी एक क्वेश्चन आ चुके हैं। इसमें क्वेश्चन ऐसा आया था कि इसमें ये दे दिया था कि H2O2 की जो डिसोसिएशन है वो फर्स्ट ऑर्डर को काइनेटिक्स को फॉलो करता है, बट उसने इक्वेशन नहीं दी थी। सिंस इक्वेशन नहीं दी थी तो क्वेश्चन इस टाइप का था कि ये इक्वेशन का बैलेंस इक्वेशन होना जरूरी था, बैलेंस के बिना आप नहीं कर सकते थे। तो कुछ क्वेश्चन था, मेरे को याद नहीं है क्या क्वेश्चन था, बट क्वेश्चन इसी टाइप का था कि उसमें ये बैलेंस इक्वेशन होना जरूरी है। तो ये जो 6 टाइप एग्जाम्पल है, ये 6 टाइप एग्जाम्पल जो है बहुत इम्पोर्टेंट भी है, और इम्पोर्टेंट के साथ साथ क्या है कि इनसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो ये आपको एग्जाम्पल पता होना चाहिए, क्योंकि इनमें क्या होता है कि डायरेक्टली आपको ये नहीं बताते हैं कि ये किस ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, क्योंकि ये इजी एग्जांपल है तो सोच के आता है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, पता ही होगा आपको कि एंटी एसोसिएशन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा। तो वो चीज़ है। देन आपको मैं कुछ वो बता देता हूँ, कुछ पॉइंट्स हैं वो नोट कर लीजिए, आगे यूज आएंगे। तो क्या होता है कि अगर आपसे 75% कन्वर्जन के लिए टाइम पूछा गया है,
T75 या गिवन है, मान लीजिए T75% इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T50% होता है। ये है, ये होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन में कभी कभी दे देता है कि योर 75% कन्वर्जन टाइम इज 2 टाइम्स ऑफ 50% कन्वर्जन टाइम फॉर रिएक्शन ऑफ टाइप ए गिव्स प्रोडक्ट, टेल मी द रेट कांस्टेंट। ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अगर उसने दे दिया कि 75% कन्वर्जन आपका 2 टाइम्स ऑफ 50% कन्वर्जन है, तो इसका मतलब है कि आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हो। क्योंकि अगर आप जीरो ऑर्डर की बात करें तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में अगर T50 अगर आपका A0/2 के होता है तो T25 आपका A0/4 के होगा। एक्चुअली T75 जो होगा वो 3/2 टाइम्स T50 होगा, ना कि 2 टाइम्स। तो ओनली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में T75 जो है 2 टाइम्स T50 होगा। तो इसीलिए आपका ये पूछ लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है। और एक और पॉइंट है इसमें, एक पॉइंट ये है कि T99.9% जो होगा वो 10 टाइम्स ऑफ T50% होता है। और एक और पॉइंट है आपका T25 जो होता है वो आपका 0.415 टाइम्स T50% होता है। तो इनका मैं प्रूफ, इन दोनों का प्रूफ करा देता हूँ। इससे प्रूफ से आपको हो जाएगा कि हाँ ये बात गलत नहीं है, सही है। तो अगर मैं देखूं जो T हाफ है वो है होता है आपका 0.693/K। ठीक है। तो T75 की बात करें तो हम इक्वेशन कौन सी लगाएंगे, इक्वेशन हम लगाएंगे T इज इक्वल टू 2.303/K log A0/A। ठीक है, ये हम इक्वेशन लगाएंगे। तो T75%, तो T75% का T25% मतलब 25% लेफ्ट बचा होगा, 75% कंज्यूम हो गया होगा। तो 2.303/K log A0, 1 minus 75, 1 minus 0.75, that is 0.25, that is A0/4. A0/4, that is 4. So 2.303/K log 4. Log 4 is 2.303/K 2 log 2. So log 2 और 2.303 को मैं बोल सकता हूँ ln2, और ln2 आपका होता है 0.693। So 0.693/K multiplied by 2, and 0.693/K is your T half. So which is equal to T75% is equal to 2 times T half. हो गया प्रूफ, हेंस प्रूफ। दूसरा भी देख लेते हैं। दूसरा दूसरे कलर में देखते हैं, ब्लैक कलर मजा नहीं आ रही है। दूसरा आपको बोल रहा है T99.9%। तो इक्वेशन वाली लगाते हैं इंस्टेड ऑफ दैट इक्वेशन। एक इक्वेशन मैंने जो अभी बताई थी आपको, T is equal to 2.303/K log 1/1 minus x। ये इक्वेशन लगाते हैं, 1/1 minus f बोल लो उसको। तो 2.303/K log 1/1 minus 0.999 which is equal to 1/0.0001। तो ये आया 2.303 डिवाइड बाई K log 10⁻³ 1/10⁻³। तो 10⁻³ हो जाएगा, सॉरी सॉरी, log 1/10⁻³। so 10⁻³ 2.303/K log 10⁻³ which is 3 log 10, and log 10 value is 1. So 2.303/K into 3. This is T99.9%, and T half, I know if this is equation number 2,
and this is equation number 1. Then T half is 0.693 by K. So T 99.9% divided by T 50% is equal to this 2.303 into 3 divided by 0.693. ठीक है, so T 99.9% divided by T 50% is equal to 9096.9 into 0.693. So it is approx 10. So T is 99.9% is equal to 10 times T 50%. Hence proof. ठीक है, ऐसे ही आप T25 को भी प्रूफ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की जितने भी क्वेश्चंस होते हैं और जितने भी टाइप्स हो गए और जो भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए, एग्जाम्पल हो गए, वो एवरीथिंग यहाँ पर कवर हो जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की और nth ऑर्डर रिएक्शन की, क्योंकि सेकंड ऑर्डर nth ऑर्डर से ज़्यादा नहीं आते क्वेश्चन, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर से आते हैं, तो एक ही लेक्चर में सेकंड ऑर्डर nth ऑर्डर रिएक्शन सभी को बात कर लेंगे। और देन हम बात करेंगे हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन के फॉर्मूले से, जो कि 1/A0 की पावर n-1 होता है शायद। तो उससे क्या होता है कि एक्चुअली 1 - n होगा, n-1, हाँ सही है। तो उससे क्या होता है कि आप उस इक्वेशन से भी हम लोग ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो हम उससे देखते हैं, उसमें भी देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन हमारे आ सकते हैं। एंड देन फिर हम लोग आरएनएस इक्वेशन की बात करके टॉपिक को समराइज करेंगे। ओके, बाय।